Hello everyone, welcome back to my channel. Before start the video, please like and subscribe my channel. So let's start. हमने पिछले वीडियो में देखा कि लूप डायग्राम कैसे बनाते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वो हमने देखा. सो इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग, देन कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टॉलरेंस टू इक्वल बायलैटरल टॉलरेंस. सो पहला जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग. तीन टाइप का डायमेंशनिंग, दैट इज चेन डायमेंशनिंग, बेसलाइन डायमेंशनिंग एंड डायरेक्ट डायमेंशनिंग, जिनका इमेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं. कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टॉलरेंस टू इक्वल बायलैटरल टॉलरेंस. सो ये जो है डिवाइड किया गया है टेबल इन 4 कॉलम्स. पहला जो है टॉलरेंस है, सेकंड जो है नॉमिनल साइज, थर्ड वन इज जो है टॉलरेंस, थर्ड एंड फोर्थ वन इज इक्वल बायलैटरल टॉलरेंस. सो पहला जो वैल्यू है दैट इज 40.6, 39.6, दिस इज कॉल्ड लिमिट डायमेंशन. इसको हमें इक्वल बायलैटरल टॉलरेंस में कन्वर्ट करना है. सो हम देखते हैं कैसे करते हैं. तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट प्लस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइड बाय 2. सेम नेगेटिव के लिए भी दैट इज अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो फर्स्ट 40.6 प्लस 39.6 इन दोनों का एडिशन करने का और उसको डिवाइड बाय 2 करने का, जो कोई वैल्यू है कि दैट इज 40.1, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करने का. अगेन 40.6 माइनस 39.6 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सब्सट्रैक्ट करके दिस इज द 0.5 वैल्यू विल कम. सो ये जो वैल्यू है यहाँ पे डालने का दैट इज प्लस माइनस 0.5. सो दिस इज टोटल 40.1 प्लस माइनस 0.5 इज द इक्वल बायलैटरल टॉलरेंस. देन हम सेकंड वैल्यू देखते दैट इज 35 प्लस 2 माइनस 0. So how this will also convert? So 37 plus 35 divided by 2, so 36 will come, that is 36 is the nominal value. Again same, इसको नेगेटिव करेंगे नॉमिनल वैल्यू के, दैट इज 37 माइनस 35 डिवाइड बाय 2, देन 1 विल कम. सो 36 प्लस माइनस 1, दिस इज द टोटल इक्वल बायलैटरल टॉलरेंस. देन फॉर थर्ड वैल्यू 60 प्लस 0.15 और नेगेटिव में माइनस 0.57. सो 60 प्लस 0.15 प्लस 59.43 divided by 2. So nominal value will come, that is 59.79. Again 60.15 plus minus 59.43 divided by 2, this is the nominal value will come 0.36. So 59.79 plus minus 0.36. So ये जो डायमेंशन है 55 plus minus 0.5, this already equal bilateral tolerance, so no need to convert in this dimension. So last one is 36 plus 0.75, again plus 0.25. So first 36 plus 0.75, this value will come, then 36 plus 0.25, this value will come. We need to add both these values and the nominal value will come, that is 36.5. we need to put here that value. Again for 36, that is 36 plus 0.75, we need to put here, then 36 minus 0.75, here we need to put and then subtract both this value and the value will come, that is 0.25. then that value we need to put here. So 36.5, this is the value, plus minus 0.25. So in next video we'll see the exercises. Thank you. Please subscribe my channel.